Today, I'd like to tell you about a small town called Bharatpur, which is located in northern India. On one side, there are beautiful temples, while on the other, there is a slum area. Actually, the story extends beyond the borders of this town where the Bedia tribes live. Because of their primary occupation, they are marginalized by society. Let's go back to the beginning and see how it all began. The British colonial rulers established the Criminal Tribes Act in 1871. This act identified many nomadic tribes as habitual criminals. Though this act was later repealed, these tribes are still bullied and stereotyped by the police and society. The nomads are marginalized and discriminated, as their life is always on the go and they travel in caravans from city to city. They need addresses. For the state, they do not exist. They are invisible and suffer from an identity crisis. The Bedia tribes are well known for putting their women into prostitution. As the men do not have any jobs and are not educated, women provide for their families through prostitution. There's communities called Bedia communities in Madhya Pradesh and Rajasthan and a bit in Uttar Pradesh, in those areas. And those are actually the source areas for girls to be trafficked to Nagpur, Maharashtra, which is one of the cities where we're doing a lot of work. The girls grow up knowing that they're destined to be a prostitute. That is what they're told and expected to do from an early age. And they'll see their mothers or aunties or big sisters doing the same thing as well. Those girls are just following the predetermined path for life that they've been given. When they're rescued, they are really confused because they say to us, "What are you rescuing me from? This is what I'm supposed to do. This is what I'm meant for. There's nothing else for me. You're not rescuing me from anything." And so there is a very deeply ingrained cultural, community impact that the girls are under, pressure that the girls are under. For centuries, these women are perfecting the art of making a man fall in love with them so they can provide for their families. They have mastered classical and folk dances, which they performed often to earn their income before getting involved in prostitution. According to a rough estimate, almost 80 million such people are living in 500 nomadic tribes that are still enslaved to their traditions. But the situation now has become a lot worse than before. As the time passes, by around 1,500 girls enter the dark world of prostitution every year. Every night, many young girls are seen waiting for their customers at roadside trucker hotels. A Bedia woman shared that her mother and grandmother forced her into prostitution. She was 15 years old when she had to join other females of her family in this profession. As astonishing as it may seem, but many females shared that their parents were the ones who forced them into prostitution traps to provide for the family. There are many nomadic villages in India where this old tradition still continues. Earlier, this prostitution was only limited to villages, but now girls as young as 11 years old are sent to different cities across India and even to other countries such as Dubai. Though police and local authorities are taking strict actions against these families, this practice still continues. जब मैं 15-16 साल की थी तब मैं धंधे में आ गई थी। शादी के लायक भी पैसे नहीं थे और फिर कमाने वाला कोई नहीं था, इसलिए धंधे में डाला। कहीं पे भी जाओ तो आदमी बुरी निगाहों से ही देखता है, कोई भी इज्जत नहीं करता हम लोगों की। जी छोड़ने की कोशिश तो बहुत करते हैं पर छोड़ें कैसे? कोई ऐसा भी नहीं मिलता जो मतलब रख ले या शादी कर ले हम लोगों से। बाछड़ा और बेड़िया समुदाय के लोग हैं और कोई भी अनुसूचित जाति समाज का वर्ग है, उसके सबके लिए योजनाएं मध्यप्रदेश में संचालित हैं। रानी दुर्गावती योजना भी अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की एक योजना है जो उद्योग विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। उसमें अगर कोई 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 50 लाख तक का भी अगर कोई लोन लेना चाहता है तो उसमें 30% छूट हमारे अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के माध्यम से दी जाती है। आदिवासी मंत्रालय है बाकायदा राज्य सरकार का, जहां पर आपके लिए विभिन्न योजनाएं चलती हैं। आपको लोन देने जाने की बात की जाती है, आपके बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा दिए जाने की बात की जाती है। तो आप तक ये जागरूकता नहीं पहुंच रही है? नहीं पहुंची सर, हम इतना जानते नहीं हैं कि हम वहां तक पहुंच पाएँ और ना हमको किसी ने बताया।
इस गांव के लिए तो वो नफरत के हिसाब से देखते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो ऊंचेर से और करार तक हमारी ये सड़क बन जाए। दूसरा, एक आंगनबाड़ी है वो बन जाए, और इन महिलाओं के लिए रोजगार बड़ी है, पापड़ है, कुछ लोग किसानी भी कर सकते हैं। भोपाल से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ये इलाका जो सूखा करार गांव के अंतर्गत आता है, बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। यहाँ पर जो सरपंच हैं कृष्णाबेन, उन्होंने इस गांव से जोड़ने के लिए एक सड़क का आवेदन कई सालों से दिया हुआ है। बार बार वो विनती भी करती हैं, लेकिन उनकी इस विनती का अब तक कोई असर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इस इलाके को जोड़ने वाली सड़क बेहद बुरी हालत में है। इसी सड़क पर से बच्चे पढ़ने जाते हैं, और जब यहाँ बारिश होती है तो यहाँ घुटनों घुटनों पानी होता है, तो ये बच्चे शिक्षा से भी महरूम रह जाते हैं। बेडिया जनजाति चूंकि हाईवेज पर मौजूद छोटे गांव में रहती है, और ये जग जाहिर है कि 55% सामान और 80% आवाजाही इन राजमार्गों के जरिए होती है, जिसकी वजह से यहाँ बड़ी संख्या में ट्रक ड्राइवर ठहरते हैं। क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में ढाबे भी मौजूद हैं, और कुछ गैर सरकारी रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र मिलता है कि इन इलाकों में औरतें और लड़कियों की तस्करी का प्रतिशत बढ़ा है, जिसकी वजह से देह व्यापार एक बड़ा व्यापार बना हुआ है। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो सदियों से चली आ रही इस प्रथा को छोड़ने को तैयार नहीं हैं, बल्कि वो इसे थोपे जाने के हक में हैं। 2 बहन भाइयों को और छोटे छोटे बच्चों को साहब हम पढ़ा रहे हैं, ताकि को उनको ना छात्रावृत्ति मिलती है, और साहब क्या कि ये काम, ये रोजगार, बेड़िया समाज का ये धंधा है, ये सब कुछ हम बंद करना चाहते हैं साहब। समाज का ये है कि साहब के मजबूरी में ये चल रहे हैं, और मजबूरी में ये लड़की ये लोगों खड़ी कर रहे हैं। हम जब सरकार हमारी नहीं सुन रही है तो मजबूरी में अपनी इज्जत बेच रहे हैं। बाप मईयो बाहर बैठे रहते हैं, आने वाला ग्राहक उनके सामने ही पैसे दे के अंदर चला जाता है। हम लोगों को क्या आएगा कि हमें शर्म उस जगह पे आती है कि आज आपने ही पैदा करी, आज आप ही उसकी कीमत अदा कर रही हो। मुख्य जो चीज़, जो सारी चीज़ों का पिछले 5 साल से हम लोगों ने देखा कि जो एक चीज़ है जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है सेफ सेक्स के लिए, वो युगल मंगल केंद्र, नेको ने, एम्पीएड्स कंट्रोल सोसाइटी ने, यूएनएड ने जो वहाँ पर सर्विसेज प्रोविज़न कराए हैं, उससे एक तो उनको सेफ पॉइंट मिल जाता है किसी भी सूरत में, क्योंकि चोरी से करते हैं तो वहाँ ना तो संसाधन होते हैं उन लोगों के पास में, और चोरी से करने के लिए जो उनके साथ सेक्स करने के लिए आते हैं वो संसाधनों के अलावा भी उनके पास टाइम नहीं होता। स्लोली जब डांसिंग प्रथा इनकी ख़त्म होते गई तो इन लोगों ने ट्रैफिकिंग पे पूरे अपने लड़कियों को इन्वॉल्व करना शुरू किया। नट कंजड़ बेड़िया कम्युनिटी के जो ट्रैफिकिंग रोका इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि ये बहुत ही हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, पूरे कंट्री में इनकी नेटवर्क है, और नॉट ओनली पूरे कंट्री में, बेड़िया कम्युनिटी की पूरी इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग जो बेड़िया कम्युनिटी करती है और ऑर्गेनाइज्ड इतने हैं कि इनके तक की कनेक्शन है। This issue is a complex cultural and socially mishandled problem that needs to be solved. We need the international community support to put pressure on the local government to help rehabilitate these tribal communities to stop this cultural practice. It is time to advocate for a change.